Hi guys, this side the Studious Girl and welcome back to my channel. Today I'm here once again for all the people who joined me for their journey with Delhi University as they cracked out the CUET UG, and I'm very happily and proud to say that people have joined me for their journey and I feel happy for that. And today I'm here to help you guys with some tips and tricks as our semester end exams are approaching with us. And I think firstly I would like to assure you guys that the journey will be very smooth and you need not to worry about the things if you are consistent and hardworking. You all must be conscious, you all must be feeling nervous that how will the journey be, कैसे जाएगा, क्या होगा, एग्जाम्स कैसे होंगे एंड वगैरह वगैरह. सो फर्स्टली मैं अब थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट करने वाली हूँ ऑलमोस्ट. आई एम जस्ट अबाउट टू गिव माई सेमेस्टर एग्जाम्स. सो मेरी आधी ग्रेजुएशन अप्रॉक्सीमेटली हो गई है नाउ. तो the journey is very smooth. You need not to worry if you are capable of doing hard work at the end. You can join various activities, various clubs, various societies, and various positions also in your colleges if you are consistent and you are hardworking, that you can cope up with your studies at the very end. So now I state few steps how you can go ahead with your due semester exams basically. So the very first step, which was of getting your enrollment numbers. So I hope all of you have got your enrollment numbers with you by now. And now you all need to enter your enrollment number in the Samarth portal, which is samarthdue.ac. And then there you need to fill out the registration form for yourself and to get your admit cards. So you need to fill out that form. Please check your codes, subject codes from the date sheet, which I'll be giving the link in the description box. Please check your subject codes from that date sheet and then only select the exams, because बहुत बार होता है कि सब्जेक्ट के नेम सेम हैं अलग अलग सेमेस्टर्स के लिए बट कोड अलग होते हैं. तो अगर आपने गलती से कोड अलग वाला चूज कर लिया तो आपको अलग वाला एग्जाम देना पड़ जाएगा एंड आपका तो जो लॉस होगा वो होगा ही होगा. दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि सब्जेक्ट कोड्स ज़रूर ध्यान से चेक करना, the biggest thing. Then comes your admit card. After filling out your registration form, your subject codes, you will pay the fees and your form will be done. And this form is just for the first semester once. After that, in second semester, third semester, every time you will be asked to pay the fee and stuff. But you need not to just again and again look out for all your details. You just be asked from next semester onwards, you'll just be asked about your subjects, your specific subject codes, and eventually the fees, which is different from for everyone. So yeah, then after filling this form comes the next step of your admit card. I believe me as a third semester one, I have received my admit card, and I think first semester ones are yet to receive their admit cards as far as I know. So the people for first semester ones still are waiting, but you'll get your admit card soon as your form, I believe, are the form is closing on 30th of November. So by maybe by 1st or 5th December you will be receiving your admit cards hopefully, or maybe very soon. You never know. So once you get your admit cards in Delhi University, I believe there is a policy. In my college, there is that you need to get a stamp from administration of your college. So मेरे कॉलेज में ऐसा होता है कि there will be a notice out, then the students can approach the administration to sign their admit card. उससे पहले या उसके बाद नहीं होगा. So please ensure that on the very first day you all are there on the administration side to get your admit cards enrolled, because इस चीज़ को लास्ट तक बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि एट द एंड यू नेवर नो कि एडमिनिस्ट्रेशन मना कर दे, साइन ना करे, कुछ भी हो सकता है. तो कॉन्सिक्वेंसेज विल बी रियली वेरी हार्श. मे बी यू मिस आउट ऑन योर एग्जाम और समथिंग लाइक दैट. तो उससे बेटर होगा कि आप वेरी फर्स्ट डे जाके एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा वेट कर लेना, लंबा वेट कर लेना अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट प्लीज़ गेट इट साइंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे.
So here you complete your second step for your exams, that your admit card is signed now. You need to carry your admit card, which is signatured by the administration of your college, every exam day, and also on your practicals day if their practicals are happening for you. Practicals also, I believe, from today onwards, the practical. I am recording this video on 27th. So today onwards, the practicals in Delhi University are starting. So first of all, best wishes to all of you who have your practical exams. Like me, at the very first part in my first semester, I also had a practical, which was around 4 to 5 days later when the college closes. I had my GE journalism, so I had the practical for that. None of other my subjects had the practical part. So yeah, you all must be having a practical part. For me, as a journalism student of GE journal elective, I would like very happily inform you that practicals, I think, for my subject which I am talking about, basics of journalism for journal elective for semester 1, the practicals are very smooth if you are ready with your teacher's notes. Specifically, you should be thorough with your syllabus. Basically, examiner never asks anything out of your syllabus. You should be confident enough, if even if you are speaking something wrong or something which is not connected to the topic the examiner is asking. So you should be mentally and physically confident and show the signs that yes, you are confident enough that you are not speaking anything wrong. So that is the one trait which helps examiner to identify that the student is um, comfortable enough in front of them, being a new person for us. So that's the biggest thing. If person is confident, teachers, even being the examiner, external or internal, they are happy with the answers, even if you maybe disconnect somewhere. So this is one of the biggest thing you should take into mind. And after practical exams, then come the theory exams. And theory exams, date sheets are out. I'm saying I'll attach the link in the description box. So the date sheet is out. You'll be having your exams as scheduled. So yeah, now I would like to let you guys know that Delhi University is the biggest equalizer. What I have assumed and experienced till date. Delhi University ensures that every student must have a stake. कुछ भी लिखो, that means कुछ भी मतलब कुछ भी वैसे कुछ भी नहीं, out of the context नहीं. If there is a topic regarding history in colonialism, I'm just taking an example, I'm not pursuing history honors. So अगर हमने ये टॉपिक भी लिया है तो हम कोलोनियलिज्म के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं. यू विल गेट सम मार्क्स इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग द answers which are specifically needed in this question, but if you're writing something related to that, maybe you not get the amount of marks which the perfect answer is getting, but still you'll get either half or either 1/4 marks of that. So you'll not lose exactly complete marks of 18 or 20 marks. You'll still lose 5, 10, 20, 18, 15 marks, but सारे के सारे नंबर नहीं कटेंगे एटलीस्ट. तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड. एंड तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे. They try to push every student till the time they reach passing marks, if someone is so blank in their answer sheets. So DU gives their best to make you with the best possible marks, I believe. क्योंकि मुझे पता है मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ब्लैंक थी and still I earned a good CGPA which was around 8 to 8.5. So without any doubt, you will earn good marks if you are having your good internals, your good continuous assessment which is IE and CA. अगर वहाँ पे आपका path बहुत अच्छा था, you have earned a good amount of marks in that side, then you, if you are a mediocre student also in your theory papers, then also you will earn around 8 to 8.5 very easily. So IE and CA plays a very important role in your results.
and eventually the theory exams also. So at the end, you will earn a good one if you are consistent with your IA and CA and thorough with your theory papers. One thing more, that your result will, especially for the first semester's ones, your result will be announced approx March or April maybe, because the fest season will come now in Delhi University and the vibes will be something else. So people will be enjoying, and once you will be over with your fests and stuff, you will eventually lead to the results of your first semester and then comes your next semester exams. So yeah, this is the cycle of Delhi University. I know people say कि odd semesters hard होते हैं and even semesters are easier, but I honestly never felt that. Honestly, I never felt that. मुझे ना तो कभी क्वेश्चन पेपर्स में कुछ खास डिफरेंस लगा, मुझे ना कभी कुछ ऐसा लगा कि मेरा ऑड सेमेस्टर बहुत हार्ड था, इवन सेमेस्टर इजी था. The thing is, odd semester is for you to entirely study and study and study stuff, at least at my college. The odd semester is full of studies, ECAs, IAs and stuff, whereas the second semester consists of fests, which is the college annual fest, the department fest and various other activities. So there is a lot of disruption all around the even semesters in my college. Disruption in the sense a positive one, which we as students feel very much excited and happy about. So yeah, so the even semester goes very fast, because the half of the semester goes out in the uh, decisions, the festivities, the planning, plotting and sub things and like that for the annual fest. So the half of the semester goes like that and half of the semester left when a teacher tries to complete out their syllabus and stuff, eventually leading to our IAs, CAs, and then the semester exams again arrives. So this is the situation at Delhi University, at my college specifically I'm talking about. And also I have seen Delhi University majorly in core papers. Our core papers, including journal elective, is of 90 marks. Whereas our VAC, which is value addition, and our SEC, which is skill enhancement, and our AEC, which is ability enhancement, are of 30 marks as far as I remember. Yeah. So they are of 30 marks and our core and journal elective is of 90 marks. So the papers which are 90 marks generally comprises of either a mock question which is of 10 marks and majorly the questions of 18 or 20 marks. So for 18 marks either तो there will be a type of question कि एक part आपके question का 10 marks का है, दूसरा 8 marks का है, या हो सकता है पूरा एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का हो, या 10 मार्क्स का भी ऐसे होता है कई बार कि एक पार्ट 5 मार्क्स का, एक पार्ट 5 मार्क्स का. So these type of questions with this much amount of marks comes, and for a 10 mark question you need at least 2 to 3 pages. For a 18 mark question 5 to 6 pages, and for 20 pages also 5 to 6 pages are enough, more than enough I believe. So and a few things, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर्स के लिए जिन्हें स्कूल में आदत नहीं होती है बिल्कुल भी इतना पेजेस लिखने की, एंड टाइम उतना ही होता है, इट्स 3 आवर फॉर 90 मार्क्स एंड फॉर 30 मार्क्स का पेपर विच इज SEC, AEC एंड WAC, they carry 1 hour or 1.5 hour. So for the papers, few tips and tricks, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं होती है, मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में, मैं अब भी यही काम करती हूँ, क्योंकि इतना लिखना इज नॉट पॉसिबल व्हेन आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेम्ड कि बच्चों को स्कूल से आदत लगवा दी जाए उतनी कि वो 5 से 6 पेज लिख सके एक क्वेश्चन के लिए. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि 2 लाइन लिखी तो 1 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया. 5 मार्क का लिखना है तो यू कैन राइट 1 पेज और 1.5, नॉट मोर देन दैट. मुझे पर्सनली याद है मैंने अपने 12th क्लास के बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो हिस्ट्री का होता था उसमें आई रोट अराउंड 2 or 2.5 pages विच वॉज फॉर हिस्ट्री. फॉर हिस्ट्री 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और पॉल साइंस के कोर के लिए इट कम्स फॉर 18 मार्क्स. फॉर हिस्ट्री इट कम्स फॉर 20 एज फार एज आई नो.
So these type of things happens. So basically, so filling out your entries, you get 15 minutes. So your first action should be to fill out your entries within 5 minutes and carefully, to ensure that every subject code, every date, every sign, everything needed is done. Then the leftover 10 minutes for you should be used to create margins on both the side of your answer sheet. Each page I mean to say, आगे भी और पीछे भी, both the sides, each page. Take a scale and ensure एक स्केल का जो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, उस स्केल के साइज का आपको दोनों साइड मार्जिन बनाना है, सो दैट योर शीट बिकम्स स्मॉल. ये हम स्टूडेंट्स का लॉजिक है, बट प्रोफेसर्स के लिए होता है कि उन्हें मार्क करना है, तो दे नीड स्पेस टू राइट द अमाउंट ऑफ मार्क्स दे विश टू गिव ऑन द दैट पर्टिकुलर आंसर. तो उनका ये होता है, और हम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से कि हमारे लिए स्पेस कम हो जाती है एक पेज पर. अब दोनों साइड से आप इतने इतने साइज का स्केल होता है, तो उसके लिए आप मार्जिन निकालोगे तो स्पेस ऑफ कोर्स कम होगी ना. तो आपको लिखने तो 5 से 6 पेज ही है, तो स्पेस तो कम करनी पड़ेगी, और प्रोफेसर खुद चाहता है कि उन्हें नीट कॉलम्स मिले ताकि वो मार्क्स लिख पाए. तो व्हाट्स बेटर देन दैट, दैट्स द बिगेस्ट ऑप्शन. यू कैन रिड्यूस योर स्पेस टू राइट. सो दिस इज द थिंग. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और मूल मंत्र है हम बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, कि स्पेस बना दो, आपके लिए भी जगह कम होगी, प्रोफेसर को भी जगह मिलेगी नंबर चढ़ाने के लिए. द अदर थिंग विच आई वॉज टू से अबाउट वॉज अबाउट डायग्राम्स. देखो, मैंने अभी बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से नहीं बना हुआ है कि एक बच्चे को आदत पड़ जाए. 12th ग्रेडर को भी आदत नहीं होती है 5 से 6 पेज लिखने की एक आंसर के लिए. और टाइम की प्रॉब्लम तो सबको ही आती है, और क्योंकि आप डायग्राम बनाओगे जगह भरेगी, दैट्स द रियलिटी. एंड प्रोफेसर्स को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो क्लीन हो जाता है एंड नीटली चीज़ें कन्वे हो जाते हैं कि हाँ बच्चे को आता है या नहीं आता है. बिकॉज अगर आपने जैसे सपोज किया, देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ वन थिंग. So you can give out a heading and you can circle it out, and then you can bring out 6 arrows from that circle and eventually write all the 6 principles below that arrow. So the professor will come to know that बच्चे को ये headings पता है कि 6 principles हैं. इसका मतलब उन्हें पता है कि clear है बच्चे को कि हाँ 6 principles हैं, तो वो लिख भी लेगा बना के आराम से. तो लिख लोगे, तो वो डायग्राम से प्रोफेसर को इतना पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को पता है उसने क्या लिखना है. एंड स्टिल अगर कोई ऐसा प्रोफेसर है जो बहुत अच्छे से चेक करना चाह रहा है, तो वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ही पढ़ लेगा कि बच्चे ने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, और उससे उन्हें उनसे आइडिया पड़ जाता है कि हाँ बच्चे ने पहला ठीक लिखा है, मतलब सब ठीक लिखे हैं लगभग. एंड स्टिल दे गिव अ ग्लांस ऑन ऑल द प्रिंसिपल्स, तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने ठीक लिखा है गलत लिखा है. और उस डायग्राम ने हेल्प कर दिया, आप जितना बड़ा डायग्राम बनाओगे उतनी आपकी जगह भरेगी, तो उस डायग्राम ने हेल्प कर दिया आपको और जगह भरने में. तो एवरी आंसर ऑफ योर्स शुड कंप्राइज ऑफ 2 to 3 डायग्राम्स. दैट्स द बिगेस्ट थिंग एंड बिगेस्ट हेल्प you get from diagrams. ठीक है. The third point which I was about to say was that you should mark out your important points, highlight them, and not with your highlighter or sketch pen or something like that. Ensure that diagram should be with pencil, and ensure that if you are highlighting something, either it should be with your pen which you are using for the entire exam, or it should be with the pencil. Nothing else should be on your answer sheet. So uh, and also one thing, you should ensure that you, मतलब अगर पेन खत्म ही हो जाए तो that's an exception, but try to keep your answers with a single pen, so that थोड़ा भी डाउट ना जाए कि किसी और से लिखवाया है एंड समथिंग. ऑल्दो दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना कि पेन खत्म किसी का भी हो सकता है, दैट्स जेन्युइन. सो इस चीज़ को भी आप प्रिवेंट करने के लिए ये कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप सेम कंपनी के पेन्स 2-4 खरीद लो कि आपके सारे एग्जाम्स उसी रिफिल से जाएं. अदरवाइज एटलीस्ट 2 पेन सेम कंपनी के तो ज़रूर रखना, ताकि आपका एक पेन ख़त्म भी हो जाए कि पेपर में आप दूसरा यूज़ कर सको. अवॉइड डाउट्स. ऑल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए चेकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीटिंग होती है, तो प्लीज़ चेक
ऑल योर बिलोंगिंग्स, कोई कागज ना हो आसपास के बेंच के अंदर, तो चीज़ें देखना। मेरा कॉलेज तो इतना भी बोलता है कि ट्रांसपेरेंट किट हो, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट हो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी आप लोगों को। एंड हाँ, बाकी आप अपनी बिलोंगिंग्स जो बैग वगैरह कॉलेज वाले बाहर रखवाते हैं, अगर आपके रूम के अंदर रखे जाते हैं तो इट्स बेटर, बट मेरे कॉलेज में रूम के बाहर ही रखे जाते हैं, तो देयर इज सम डाउट ऑफ मे बी कि एक्सचेंज हो जाए उठाते समय या कुछ भी, तो यू कैन कीप अ चेक ऑन दैट कि आप कैसे अपने बैग को आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका कुछ, कि मे बी यू स्टिक अ स्टिकर ऑन योर बैग और समथिंग लाइक दैट, ताकि कोई एक्सचेंजेस ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये नॉलेज मेरे पास थी। So this was all from my side. I gave my best, still giving my best, and I know I'm not consistent with my 12th graders, but I genuinely wish from the very bottom of my heart the very best of luck for all of you guys. Being it 12th graders, being it the due semester 1 people, because exams are approaching for all of us. Practicals must be going on for class 12th. ड्यू सेमेस्टर के भी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, सेमेस्टर भी आने वाला है. So once again, wishing a very best of luck to each one of you looking at my videos, and I'll drop out the links for my drive for DUSEM exams, my previous year question papers, and also for the date sheet of Delhi University. So you can check out in the description box. And for the tips, tricks video for 12th graders, and also for Delhi University ka video, I'll connect it with the I link button here. So do ensure that you watch those videos. They'll help you a lot. And that's all for this video. The Studious Girl signing off. Please do like, share, subscribe, and comment to my channel. Bye bye.